Hello everyone, welcome to the AY tutorials. We are going to start our new YouTube channel, AY tutorials. It is the pharmacy related channel where we are going to post the videos which will be helpful for you for the preparation of government exams. We are going to start our channel with the very special and interesting subject, pharmacology and toxicology. Introduction to the pharmacology. Definition. Pharmacology is the branch of science concerned with the study of drugs and their actions on living organisms. It encompasses the mechanism of drug action, their effects on the body and their therapeutic uses. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि फार्माकोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग ड्रग्स का स्टडी करते हैं ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो इफ़ेक्ट्स जो है ये बॉडी पे क्या क्या आते हैं और उस इफ़ेक्ट का हमें क्या थेरापेटिक यूजेस मिलता है ये हम लोग स्टडी करते हैं. स्कोप एंड इम्पोर्टेंस. स्कोप जो है फार्माकोलॉजी का ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मेडिसिन में है. एंड इम्पोर्टेंस में हमने अभी देखा डेफिनेशन में कि इम्पोर्टेंस तो ट्रीटमेंट में तो है ही, लेकिन ड्रग डेवलपमेंट एंड पेशेंट सेफ्टी में भी है. ड्रग डेवलपमेंट एंड पेशेंट सेफ्टी, दिस टू टर्म्स आर कम्स अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे. Then branches of pharmacology. There are two main branches of pharmacology, pharmacokinetics and pharmacodynamics. Pharmacokinetics is the study of what the body does to the drug, that is absorption, distribution, metabolism, excretion, that is ADME. So pharmacokinetics is basically what it is, the analysis of process of drug absorption, distribution, metabolism and elimination that determine the time course of drug action in response to the administration of drug dose. And pharmacodynamics is the study of what the drug does to the body, that is mechanism of action. So pharmacodynamic is the study of physiologic effect of the drug on the body. Here in this picture we have explained what is pharmacokinetic and dynamic. So in pharmacokinetics, drug metabolism and transport, circulating proteins and metabolites, renal clearance and intestinal excretion comes. And what comes in pharmacodynamics is nervous system, immune system, respiratory system, cardiovascular system, endocrine system, genitourinary system, gastrointestinal system and musculoskeletal system. Branches of pharmacology. There are some another branches of pharmacology: pharmacotherapeutics, toxicology. What is pharmacotherapeutics? It is the use of drugs to treat, prevent or diagnose the disease. The term pharmaco and therapeutics. Pharmaco means it is related to the drug and therapeutics is related to the treatment of disease. So it is the use of drugs or to study the drugs which are going to treat the disease. Then toxicology. Toxicology is the study of adverse effect of the drugs on or other chemicals on the human body. Clinical pharmacology. It is the scientific study of drug, both old and new, in man. It includes pharmacodynamic and pharmacokinetic investigation in healthy volunteers as well as in patients. So in clinical pharmacology, we are going to study of how the drug work in humans and how they can be used safely, effectively and economically. This term is basically comes under the clinical trials. Chemotherapy. It is the treatment of systemic infection or malignancy with the specific drug that has selective toxicity for the infecting organisms or malignant effects on the host cells. Drugs in the general can thus be divided into pharmacodynamic agents and chemotherapeutic agents. In simple words, chemotherapy is the treatment that uses the drugs to stop the growth of cancer cells, either by killing the cells or by stopping them from dividing. Chemotherapy can be given by mouth, injection, infusion or on the skin, depending on the type and stage of the cancer being treated. Then pharmacodynamic agents means what? These agents works on the
respective system of the body that the physiological action of that specific system changes, which will helpful for the chemotherapy. And chemotherapeutic agents works on that specific cell, and these agents either kill the concerned cells or decreases its growth. This is how it works. Pharmacy, it is the art and science of compounding and dispensing drugs or preparing suitable dosage forms for administration of drugs to man or animals. It includes collection, identification, purification, isolation, synthesis, standardization, and quality control of medicinal substances. So basically, pharmacy is the science and practice of preparing, storing, and dispensing medicines. It also includes researching and producing and reviewing of medicines. The ultimate goal of pharmacy is to ensure that the medicines are safe, effective, as well as affordable. Sources of drugs. There are two main sources of drugs, natural and synthetic. In natural, it includes plants, for example, digoxin. It is synthesized from foxglove. Then animals, in that insulin from pancreas, and minerals, in that iron salts and calcium salts. Synthetic sources, chemically synthesized in laboratories. Okay, then synthetic drugs are synthesized in laboratories, and most of the drugs are synthetic drugs. Then the term biotechnology. Biotechnology is what? It is the recombinant DNA technology used to produce drugs. For example, insulin and growth hormones. Insulin and growth hormones is prepared by using the technology that is biotechnology. In this recombinant DNA technology, by using enzymes and various laboratory techniques to manipulate and isolate DNA segments of our interest to create new drugs. फार्माकोकाइनेटिक्स, पहले हम लोग एब्सॉर्प्शन क्या है देखेंगे. डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग मूव्स from its site of administration into the bloodstream. Then routes of administration. There are certain routes of administration, that is oral, intravenous, intramuscular, subcutaneous, transdermal, inhalation, etc. Factors affecting on absorption. There are certain factors which affects on absorption, and that are formulation, route of administration, blood flow, gastrointestinal motility. Then what is bioavailability? Bioavailability is the fraction of an administered drug that reaches the systemic circulation in an active form. We all know that we calculate the bioavailability, that is the formula for that is AUC oral divided by AUC IV. AUC is nothing but the area under curve. And graph, we just explain the graph as time versus drug concentration in plasma. Distribution. Definition of distribution. It is the process by which a drug is transported from the bloodstream to the various tissues and organs of the body. Then there are some factors which affects on the distribution, which are blood flow, protein binding, tissue permeability, etc. Then what is protein binding? Drugs bind to the plasma proteins and affecting their distribution and availability. See, how protein binding affects on bioavailability is either by changing the effective concentration of the drug at its site of action, or by changing the rate which the drug is eliminated, and thus it affects the length of time for which effective concentration is maintained. देन मेटाबॉलिज्म को ही बायोट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द बॉडी केमिकली मॉडिफाइज ड्रग्स, यूजुअली इन द लिवर. देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन? इट इज़ यूजफुल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ड्रग्स into more polar, water soluble metabolite for easier excretion. Excretion is the process by which drugs and their metabolites are eliminated from the body. Then routes of excretion. Kidneys is the primary route of excretion. Then liver with the help of bile. Then feces, lungs, etc. Renal excretion के 3 मेन मेथड्स होते हैं.
that is glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. ये तीनों भी मेथड्स हम अगले चैप्टर में देखने ही वाले हैं डिटेल में. देन ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शंस. रिसेप्टर्स मतलब क्या? दे आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, यूजुअली प्रोटीन्स, ऑन और इन द सेल्स विथ विच ड्रग्स इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट. मतलब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन, दे आर प्रोटीन इन नेचर, जो सेल्स में या फिर सेल्स के बाहर होते हैं और ड्रग्स को पहले उनको बाइंड होना पड़ता है एंड फिर वो एक्शन दिखाता है. देन ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग. ड्रग्स बाइंड टू द रिसेप्टर बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड एफिनिटी. ड्रग बाइंड होता है रिसेप्टर को बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर to show its action. Then types of receptors. There are certain types of receptors, that is G protein coupled receptors, ion channel, enzyme linked receptors and intracellular receptors. Pharmacodynamics, drug action. यहाँ पे हम लोग definitions देखेंगे. Agonist, drugs that bind to the receptors, activate them and producing a biological response. मतलब क्या है कि ड्रग्स रिसेप्टर को बाइंड होते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं और रिस्पॉन्स शो करते हैं. देन एंटागोनिस्ट. ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर्स बट डू नॉट एक्टिवेट देम, दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ अगोनिस्ट एंड प्रोड्यूसेस इट्स एक्शन. सो ड्रग्स रिसेप्टर को बाइंड होते हैं यहाँ पे और क्या करते हैं कि ब्लॉक करते हैं उसके एक्शन और इफेक्ट शो करते हैं. Then dose response relationship. The relationship between the dose of a drug and the magnitude of its effect. Then potency. The amount of drug needed to produce a given effect. Potency का मतलब क्या है? एटलीस्ट उतना तो अमाउंट चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट की जो इफेक्ट शो कर सके. देन एफिकेसी. द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग कैन प्रोड्यूस. मतलब जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है ड्रग का उसको हम लोग इफिकेसी बोलते हैं. देन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. डेफिनेशन. इट इज़ अनइंटेंडेड एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स. देन देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस दैट आर साइड इफेक्ट, एलर्जिक रिएक्शंस, idiosyncratic reactions and toxic effects. Then there are certain factors which are contributing to the adverse drug reactions, that are drug related factors and patient related factors. Drug related factors means certain drugs are not suitable when it goes with some another drugs and likewise. And patient related means age, genetics, then disease state. इसके कुछ रीजंस भी होते हैं जैसे कि सुपर थेरापेटिक डोज, मतलब ज़्यादा डोज लेना दैन अ नॉर्मल डोज. देन अगर ट्रीटमेंट फेल हो गई तो देन कोई एलर्जी होती है कुछ पेशेंट्स को, तब भी ये सब हो सकता है. देन अगर आप लोग मिस यूज़ करते हो ड्रग का तब भी ये हो सकता है. या फिर ड्रग इंटरेक्शन होती है, ड्रग फूड इंटरेक्शन होती है, ड्रग विड्रॉल होता है, ये सब इसके रीजंस होते हैं. देन ड्रग इंटरेक्शन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज़ अल्टर्ड बाय अनदर ड्रग. मतलब क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर NSAIDs जो है, जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, ये हम लोग अगर डायूरेटिक्स के साथ ले लेंगे तो डायूरेटिक्स का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम होता है. ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल बताया आपको. देन मैकेनिज़्म. इसका मैकेनिज़्म क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन मतलब इट अफेक्ट्स ऑन ADME एंड फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन मतलब इट अफेक्ट्स ऑन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन. देन इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अगर ड्रग इंटरेक्शन होती है तो क्या होगा? इट कैन लीड टू इंक्रीज और डिक्रीज द ड्रग इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड थेरापेटिक फेलियर. एक तो इफेक्ट नहीं मिलेगा या फिर टॉक्सिसिटी होगी या ट्रीटमेंट फेल हो जाएगी वो. इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी क्वेरी लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. और आपको अगर कौन सा भी वीडियो चाहिए
जो कि हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज़ बताइए। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।